नमस्कार। नमस्ते। मेरा नाम सुरेश नायर है। मैं टोरंटो से आया, तिरुवनंतपुरम से, टोरंटो से, केरला से आया। मेरे साथ मेरे बीवी और मेरा बेटी, हम तीनों आए हैं। और मेरे साथ मेरा प्रॉब्लम है, मेरे को स्पॉन्डिलोसिस का प्रॉब्लम है, साथ में बीपी का भी है। फिर मैं आई एम चेन स्मोकर। तो मेरा इधर आने के बाद मेरा ट्रीटमेंट डॉक्टर साहब ने शुरू करा है। उससे मेरे को बहुत लाभ है। मेरा सिगरेट स्मोकिंग क्विट हो गया और मेरा जो गर्दन का जो प्रॉब्लम था ऑलमोस्ट 70% हो गया। रेस्ट 30% विल बी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। बाय द वे, डॉक्टर साहब ने जिस हिसाब से मेरे को बताया उसका उपाय क्या करना है वो मैं घर जाकर करूँगा और मैं बहुत संतुष्ट हूँ। मैं और लोगों को भी जरूर बोलूँगा कि आनंद कुंज आना। उसके वो जो जितने भी क्रोनिक पेशेंट है, जो सम डिसीज आर दैट which are not curable, which they may not be able to, they must have seen many doctors but not been able to get the proper result. That patient should certainly visit Anandkunj. I am quite confident that if we come to Anandkunj, you will certainly benefit. That I am 100% sure. मैं आशा मैं इधर का डॉक्टर साहब और इधर का टीम आनंदकुंज सब लोगों का आभारी हूँ। सबने में हम लोगों को बहुत अच्छी तरह से ट्रीट किया, बहुत गाइड किया, बहुत सहयोग दिया। मैं सब प्रार्थना करता हूँ सबको ईश्वर सुखी रखे। यस, बहुत बढ़िया। सो आप कितने सालों से स्मोकिंग करते थे? मैं सर करीब 45 साल से 45 सालों से स्मोकिंग करते रहे हैं। और दिन में कितने सिगरेट्स होते थे? शुरू में पहले तो 2 पैकेट तक चले जाता था। हाँ। तो अभी आपने पूरी तरह से यहाँ पर आने के बाद स्मोकिंग बंद किया है और अभी आपको क्या लगता है कि आप स्मोकिंग से छूट चुके हैं, वापस नहीं करेंगे स्मोकिंग? बिल्कुल नहीं करेंगे। यस, बिल्कुल नहीं। वेरी गुड। तो बहुत बहुत अभिनंदन है कि आपका स्मोकिंग छूट गया है, क्योंकि ये ऐसे छूटना बहुत बड़ी बात है। यस यस यस। और दूसरी बात, जैसे कि आपका सर्वाइकल का था, तो सर्वाइकल का भी 70% तकलीफ आपका मेरा ये प्रॉपर्ली नहीं घूमता था ये। अभी नो आई एम एबल टू, उतना स्ट्रेन और पेन नहीं है मेरे को। पहले क्या होता था कि अगर हाथ स्ट्रेच करते थे स्ट्रेन फील करता था। अच्छा, नो दैट इज नॉट देयर। earlier I could move up to this also. Very good. Now I can move up to this. That means remarkable improvement. Very good. Very good. और अभी मैं बीपी का गोली भी नहीं ले रहा। मेरा बीपी अभी नॉर्मल है। अच्छा, एवरी डे मैंने सुबह शाम, मैंने इनिशियली सुबह शाम चेक कराया था। बाकी दिन डेली मॉर्निंग में होता था, तो इट रिमेन्स नॉर्मल। सो मैं अभी बीपी का गोली भी नहीं ले रहा है। So here is one case in which he has able to quit not only his smoking, but he is able to quit the medicines that he was taking for his hypertension. So very good. Also, he has able to relieve his neck pain because of cervical spondylitis. Yeah. And this has happened only in 10 days. Yes. So, and I also reduced my weight up to 4 kg, 4 in 9 days. 9 days. So congratulations to you. Thank you very much. Thank you very much. And we expect you to follow the given regimen. Certainly, I would certainly visit again here. Yes. Now we have your wife also along with you. नमस्कार। नमस्ते। मेरा डायबिटिक का प्रॉब्लम था, फिर सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, आर्थराइटिस, बीपी, क्या नहीं है बहुत कुछ था। और यहाँ आने के बाद फर्स्ट एक्चुअली मेरे को ये शिवाम्बू के बारे में प्रिपेयर नहीं था। मैं आई वाज रिलक्टेंट टू टेक शिवाम्बू फर्स्ट डे। अभी मेरे को बहुत महसूस नहीं करना था। फर्स्ट डे से मेरे को लेना था, क्योंकि उसके बाद मेरा वेट भी रिड्यूस हुआ, वो डायबिटिक का दवाई छूट गया और मेरे को मीन्स आर्थराइटिस का भी प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है ऑलमोस्ट। मेरे को मीन्स सीढ़ी नहीं चढ़ती थी, मैं अभी आराम से सीढ़ी चढ़ के जा सकती है मेरे को। और वजन कितना कम? वजन 3 किलो कम हुआ। एक्चुअली मेरा फास्टिंग का भी प्रॉब्लम हो गया। शुरू में फास्टिंग नहीं कर पाए, इस वजह से मेरे को अभी बहुत, मैं सॉरी फील कर रही हूँ। तो जब when she had come, that time she was reluctant to urine therapy, but when she came and got to see everybody's results and when she heard different lectures,
she was very well convinced about this therapy, and then maybe at 4th day or 3rd day you started the Second day onwards I started Shivambu. So she started Shivambu, and now she is almost very well relieved from most of her problems. So happy? I'm very happy, sir. Yes, yes. And I will recommend everyone to come and visit Yes. Anandkunj and take treatment here. Yes. This is not a treatment, it's a therapy, and Yes. just like an ashram. Yes. We can enjoy the environment and everything. It's a pleasant place. मीन्स इधर आने के बाद किसी को रिग्रेट नहीं होगी क्यों Yes. आया है. हाँ. सब हैप्पीली जाते हैं. जितने भी लोग इधर आया मिला है, सब all are very happy and all are satisfied. And ये एक सजेशन है सर, इसका अवेयरनेस लोगों को देना है. और फ्रॉम चाइल्डहुड ऑनवर्ड्स people should give Shivambu to children so that they can have that means what to say तंदुरुस्त होके. तो आप हमारे दर्शकों को क्या बताना चाहेंगे? दर्शकों को बताइए. दर्शकों को ये बोल रहे हैं कि ये अवेयरनेस हो. Shivambu is the best medicine. This is not a medicine. This is a अमृत. जो जूस की तरह पी सकता है. Everybody should take Shivambu and visit Anandkunj for treatment. To be critical patients, just like cancer patient, coming here and getting well, going back with means gratitude to. Yes. Or moreover, the employees and staff here are all very cooperative and very well they are managing taking care of every patient. Means not one or two, all the patients are well cared. And this hospital in such a surroundings, it is the atmosphere is very pleasant and pollution free. सबसे ज्यादा मुझे खुशी है कि एनवायरनमेंट इतना अच्छा है कि सिटीज में ऑक्सीजन बहुत कम होता है, मगर यहाँ तो ऑक्सीजन का कभी सोचने की जरूरत नहीं है. मीन्स जैसे डॉक्टर साहब बोल रहे 35 किलोमीटर के अंदर कोई फैक्ट्री या कोई पोल्यूशन वाला कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है. ब्यूटीफुल एनवायरनमेंट. यस. तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका. ऐसे ही आप इसी रास्ते पर चलते रहिए, मिलते रहेंगे. जरूर सर, जरूर.